चुप, जूते चाहिए। हेलो एंड वेलकम। हमारे कुछ और पैनलिस्ट शायद अभी आने वाले हैं, पर फिलहाल मेरे पास रीमा और वेदा है और जॉयदा भी है। जॉयदा, ये कैसा एक्सप्रेशन है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। किसके लिए बुरा लग रहा है? वेदा के लिए बुरा लग रहा है। वैसे रीमा और वेदा का झगड़ा हो चुका है। अब रीमा एनी मोर वेदा की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगी। शायद वो आपको वो support बिहाइंड द सीन था। झूठ बात, नहीं करोगी सपोर्ट तुम? करूंगी, कर रही हूँ। 115 पिछली बार से इम्प्रूवमेंट देखो, जो $68 थे 115 पे जो आए। जो तुम्हारे जूते हैं ना, वो मैं पहन पहन के फोटो खींच के भेजूंगी तुम। जॉयदीप से स्टार्ट Anyway, कर लेते तो हैं। आज फिर भी जो भी हो, फिर भी एक लो स्कोरिंग गेम ही था। हम यही बोलते आ रहे हैं, विकेट स्लो हो रही है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है शायद बैट करने में। लेकिन राजस्थान ने पहले बैटिंग की, तो आज उनकी बात सबसे पहले करेंगे। अभिजीत कहाँ गए? अभिजीत नहीं आ रहे इस शो में। वो बोल रहे थे रियान पराग को क्यों लिया है। मुझे लगता है उन्होंने बचाया आज अपनी टीम को। Because बिल्कुल। of course 56 of 31 वो एक crucial knock था, giving them a good total in the end. एक just enough बना लिया उन्होंने, giving the bowlers something to fight for, right? Joyda, your thoughts? आप कुछ नहीं Yeah, बोल true. रहे। उन्होंने तो मैच बनाया है, but I have a few questions for the panelists here. I think in the beginning RCB was superb with the ball. Okay, so let's not talk about the decision. My question, especially to Rima and Veda, firstly, chasing 145, what was the need to be so aggressive at the beginning? विराट वो जो मिडविक स्क्वायर लेग में सामने गिर गया, उसके बाद फ्लिक मारा, नेक्स्ट बॉल अगेन वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिसने ट्रेंड बॉल, वो लेमन कट हुआ 145 नॉट 185, 195। टाइम है तुम्हारे पास आज। टुडे वाज एन आइडियल डे इवन फॉर दैट मैटर फैफ and everybody who came, they looked so aggressive in the beginning. The first ball dismissal caught in the slips, कितना दूर का बॉल था? 6 में हम 35 पे रहते, 40 पे रहते तो मैच बन जाता। एब्सोल्युटली Your जॉयदीप, मैं thoughts, एग्री, ladies? इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि I am like very much biased towards the player because I know exactly how you would be feeling. बाहर से हमें लगता है कि बहुत टाइम है, but when you're in there, you want to get going and you want to, be in that um, pitch, in that game where things are happening. You want to be a part of it. And like you said, Virat had a lot of time. Now he's got first ball ducks two games in a row. So after that thing, which the catch got dropped, the first two balls he looked solid, but the minute that catch thing happened, he kind of might have felt that today, let me take some chances. Maybe it's going to work or things like that. So it is very instinctively in that moment you kind of make decisions, though for the fact that it is 145, there's a lot of runs, a lot less runs to be chased down, and we've got the batters to do it. But when you're in doubts in your head, and it just makes you do different things, and it kind of comes out, either it comes out as a good move or it comes out as a bad move. So in RCB's case, it's come out as a bad move the way they've gone about it. But at the same time, like everybody were like, "Oh, Rian is batting ahead of Hetmeyer. Hetmeyer is the one who's in form and things like that." And suddenly he comes and plays that knock, which eventually made the match for them. So that again, if Veda, Rian, I agree with you on Virat, but if you look at Faf also, okay, I give it to you that Virat's mindset and he thought he'll go hammer and tongs. But after they lost Virat, the Faf and then Maxwell first ball, with Kuldeep, those balls caught in the slips. I can understand it's 185, power play, you want to be 650, 660 for 2, 3, doesn't matter. You can't fall back in the game. But here in this game, if you're 3 down for 30, then you're falling back in the game. True. I agree with Joyda. I think they should have probably stayed there, built the innings in the beginning instead of going aggressive. Rima, your thoughts? एब्सोल्युटली आई टोटली एग्री विद जॉयदीप क्योंकि शॉट सिलेक्शन देखिए, अगर फुट मूवमेंट देखिए, सारे आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं। 144 लोएस्ट टोटल डिफेंड की है। राजस्थान की बॉलिंग जरूर अच्छी थी, लेकिन उसका साथ दिया था खराब बैटिंग ने भी। फॉर्म नहीं है,
विराट कोहली के पास, लेकिन फॉर्म था फैफ डुप्लेसिस के पास, मैक्सवेल के पास। आते ही फर्स्ट बॉल पे आप बाहर के बॉल छेड़ रहे हैं, फुट मूवमेंट कोई था नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच के आए थे कि इन्होंने अच्छा कर लिया, हाफ जॉब डन था। ये नहीं सोचा कि आप पहले मैच जीते, आप शायद नेट रन रेट की तरफ सोच रहे थे कि हमने उनको कम पे रोक लिया है, अब वी कैन चेज द टोटल एंड इम्प्रूव द नेट रन रेट एट द सेम टाइम। वहां पे शायद गलती हुई, क्योंकि जो रनआउट भी था शाहबाज का, वो दोनों बार हसरंगा भी ऐसे आउट होते, इतना हाफ पिच पे आके आप नो बोल रहे हैं कार्तिक को। इतनी सारी मिस्टेक्स आप तभी होती है जब थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता। मेरा जब और एक आप क्वेश्चन था, मेरा और एक क्वेश्चन था पैनल के लिए। जब शाहबाज और पाटीदार एक साथ बैटिंग कर रहा है, टू डोमेस्टिक बैटर्स कमिंग ऑल द टाइम, उसके बाद आ गया प्रभु देसाई। I know Dinesh Karthik is a finisher, but don't you want a senior player like him to come a little early for the two people in the middle don't panic. These guys are not IPL stars. They are just getting their feet in IPL. You know, Shahbaz bolo, Patidar bolo, in and out, Prabhu Desai. तो अब मुझे दिनेश कार्तिक फिनिशर है, तो उसको अभी 14 ओवर, वो 8 नंबर पे आना पड़ेगा, 14 ओवर में आना पड़ेगा। अगर वो आ जाते, since the total is 145, little bit of calmness, little bit of experience, little bit of talking to the other guy कि ये डालेगा, इसके बाद ये डाल सकता है, ये डालेंगे तो ये करेंगे, something like that. I don't know, I'm thinking this way, maybe I don't know if you guys are. यही गलती शायद सीएसके ने भी की थी जयदीप, कल धोनी को ना बेच के जडेजा को भेजा, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। और आज भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बीच में नजर नहीं आया। आप इतनी लेट तक के लिए मैच छोड़ देते हैं, फिर वहां पे एक गलती हुई और मैच आपके हाथ से निकला। लेकिन आज Imaji, टोटली Jadeja, I can still understand. Jadeja is an international cricketer, but फॉर्म I'm नहीं थी talking उनके about पास। हाँ फॉर्म नहीं है, I agree with you. But इधर में Patidar, Shahbaz, Prabhu Desai, three guys who are getting their feet in IPL. They are not Robin Uttapa, they are not Raidus. They are getting their feet in the IPL. वो पता चल रहा है क्या गेम है उनका बीच में। जब छोटा सा टोटल है, they stifle you for runs, bowling attack is good, उसमें एक एक्सपीरियंस आदमी बीच में रहता ना, तो थोड़ा कामनेस आता है। रिस्क वो लेते, वो बोलते मैं करता हूँ, ओवर में 6 रन, तू 4 रन निकल मेरे लिए, 3 रन निकल मेरे लिए। मैच को पास लेके जा सकते थे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए बैटिंग लाइनअप पे। सिचुएशन चेंज होती है, नंबर्स भी चेंज हो सकते थे। एब्सोल्युटली करेक्ट। Sorry, Priya ji, I took your job over for 2 minutes. No. You're since we are what I talking. feel is with the situation, how we were, and when Maxwell got out, I kind of expected, maybe DK would come out, just considering that all the senior ones are already out. You needed someone to just go and get the boys around to play, and so that when they know that they're not doing the bulk of the job, that is when you can actually get the best out of them. So bulk out of the job in the sense they're not thinking what needs to be done and to execute it. So there will be someone who will be the brains for both of them, and he would be like, if in this case, if it is DK would be like, I'll use the brains, this is what you can do, so probably concentrate on executing the shots and getting runs. What are your areas, who's the bowler, where you can target. So the thinking aspect, I'll handle it, you go play freely. That is one thing I feel when there is a senior and a junior batter. That is where it helps. The confidence of just that person standing in the non-striker end gives a lot more. So maybe that, I think RCB kind of missed a trick today. They held DK for a long, and Suyesh and Shabazz, they were not going. They're not. It's either like you go 10 balls, 15-20 run बना लिया, out हो गया, कोई बात नहीं. It's like you're playing 15-16 balls, but you're not ahead. Precisely my point. Yeah. Precisely my point, because ये तीनों ने रन नहीं बना रहा था, और एवरी 2-2.5-3 ओवर एक विकेट गिर रहा था. So ना रन बन रहे, ना विकेट रोक रहे हो, तो you're not achieving anything at the target. You spot on. Correct. And I think RCB की बात शुरू कर ही दी है, तो let's continue with that itself, because problems काफी सारी है, as a unit click नहीं हो रहे हैं, and batting के order के साथ साथ the problem we are also seeing is that the senior players, the top order is just not performing. And even today, like by the 15th over, we saw target थोड़ा बहुत control में फिर भी था. They needed 57 of 33 deliveries, and उस time पे अगर दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, they are dependable, but you can't always depend on them, because अगर top order नहीं perform कर रहा है, तो आपका पूरा pressure उस middle order पे आ जाता है, and it sometimes they have their off days.
So what should really be Faf's strategy going ahead now, Rima? देखिए, मैं तो उनको ये कहूँगी पहले पॉज़िटिव खेलना होगा क्योंकि दे आर ट्राइंग टू हार्ड। क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी रन्स बनते हैं। अगर आप सबके यहाँ शॉट्स देखेंगे दूर से खेल रहे हैं, विराट कोहली की वो इनिंग चलो वो तो फॉर्म में नहीं हम समझ सकते हैं, क्या उनको रेस्ट देना चाहिए, 2-3 मैच का ब्रेक देना चाहिए ताकि फ्रेश होके आएँ। या फिर क्या आप बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करेंगे, आप मैक्सवेल से बात करेंगे कि आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, अगर आप 6 डॉट भी खेल देंगे तो अगली 6 बॉल पे आप 24 रन बनाने की आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं। सो क्या रोल आप दे रहे हैं किसी प्लेयर को जैसे कि जॉयदीप ने कहा तीनों डोमेस्टिक प्लेयर आपने साथ भेज दिए। आपने प्लान है आपका वो था लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैटिंग ऑर्डर वो होना चाहिए। आपकी ताकत क्या है, आप उस पे खेलिए। कहीं न कहीं एज़ अ यूनिट क्लिक होना पड़ेगा। वो कैसे होंगे? वो तभी होंगे जब आप रोल डिफाइन करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सब क्लूलेस नज़र आ रहे हैं, कोई बाहर से शॉट खेल रहा है। ठीक है ना, आप इतना लंबा टोटल नहीं था, आप वेल लिफ्ट कर सकते थे। कुछ बातें बाहर की बॉलें लीव कर दीजिए आप और फिर उसके बाद शॉट्स खेलिए। एट टाइम्स आपको इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, वो ग्राफ्टर बीच में चाहिए जो गेम चलाए। अगर गोली आउट हो जाएगा, फैफ आउट हो जाएँगे, सो नीचे सिर्फ एक डीके का एक्सपीरियंस बनता है। बीच में मैक्सवेल आते हैं, वो हमेशा वो बैंग बैंग वाली इनिंग खेलना पसंद करते हैं, वो कैमियो खेलना पसंद करते हैं, तो उनको एक रोल देना पड़ेगा कि आप अब नंबर 6, नंबर 7 पे नहीं खेल रहे हैं, आप नंबर 3, नंबर 4 पे खेल रहे हैं। सो वहाँ पे आपको मैच बनाना है, जिताना तो लास्ट का काम है ना। सो मैच बनाने वाला है, एज़ अ बैटिंग यूनिट क्लिक करनी पड़ेगी। बॉलिंग यूनिट फिर भी आज सेटल नज़र आई है। Yes, बैटिंग yes, यूनिट में बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि बैटर का absolutely. एक्सपीरियंस जब जाता है ना, कॉन्फिडेंस जब जाता है ना, टाइम लगता है आने में। जरूर। और बॉलिंग यूनिट ने फिर भी आज क्लिक किया है, बॉलिंग अटैक अच्छा था। जॉयदा, रीमा भी ये पॉइंट कह रही थी कि विराट अगर फॉर्म में नहीं है और उनका समझ में आता है तो बिकॉज एट दिस पॉइंट नाउ आरसीबी नीड्स टू बाउंस बैक, दे नीड टू गेट बेटर इन द रिमेनिंग व्हाटएवर 5 और 6 मैचेस दे आर लेफ्ट विद। तो अब उनको वो टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अनुज रावत को आज बाहर रखा एंड देन दे गॉट पडितर। सो नाउ विराट कोहली यू थिंक शुड बी रेस्टेड? No, I still think Virat has to play every game because you can't rest a player of his caliber, pedigree, unless he wants to rest himself. And I think he is now, that now that he hasn't done well, I don't know him very well, but I have a feeling that he wants to prove everybody wrong, which is why he's as good as he is. And, you will have to put him in the team. But I think, he's done it for so long. There are others who need to take responsibility. He's done it for so many seasons. He's the highest run getter ever. So he's allowed a lean season. What about the others? What about the Fafs? What about the others that are playing around the team? They need to take responsibility. They need to say, okay, buddy, so many years he's done it for us. Now we'll do it for him. So it's wrong to completely put the blame on him. And when Faf got out and he was going out, he was saying something to Maxwell. Maxwell is such a hurry to come and bat, barely listened to him, walked past him, and played a really loose shot, caught in the slips. That ball could have been left alone. It's your first ball. And because it's 145, I know that could have gone for 4, it's a brilliant shot. But nothing succeeds like success. But when it doesn't, then you're up for criticism. True. Veda, your thoughts on RCB going ahead before we move to the Rajasthan Royals? I've been speaking about getting Virat to open the innings, so that thing was sorted today. Considering they dropped Anuj Rawat and they've got Virat up the order, and that is the right way to go. Whether he scores or doesn't score, like he's been scoring for almost 15 years now. So if this patch is going to be there, it will be there for a while. And considering how Virat is, he is someone who would want to go out on the field and fix it. He is not someone like I'll rest at home for 2-3 days and I'll come back and do it. It doesn't work like that. He's that kind of a cricketer. He wants to be in the middle of the action. But the thing what I feel the missing link is the Indian batters, like we had Anuj Rawat, we tried Rajat today, who seem to be not sure about what is happening or what role they've given. But I still feel that there is this guy Mahipal Lomror who actually Yeah. looked really good last season and come in. He batted number 3, number 4, came in with that just 20 ball 40, 20 ball 45 runs, those kind of innings, and he plays spin really well. So RCB at this moment they need something like that. With all of them to come together, I think the missing link is him, where you have your Faf and Virat's going to open. If there is a fall of wicket or anything, just come in so that you play at least 15, 20 balls. But if you are able to score 40 runs,
I think the dynamics of the game changes itself. Like the way, if by the end of 6 over, if you are 20 for two, and this guy is capable of making it look like, in a matter of 2-3 overs, the scores can be 45 for two, or even if he gets out, say, about 50 for three. That kind of momentum is what is required, I feel. It's like individually they're playing, but the Correct. one who's playing well gets out, but for the other person who's coming in is not able to match what the other person was doing. It's suddenly kind of, Whether, especially today, suddenly kind of dead cricket in between. So I whether, need do, that link should do, be. Whether do you see a difference in Virat in the first 10, 12 balls that he plays now and the way he used to play back in the day when he was in tremendous form? Because it's evident to me, but I might be wrong. So just the way he approaches his first 10, 15 balls compared to every time when he's in form compared to now, sometimes it can happen. We've all been through bad patch and then you really want to get it back quickly. So you kind of go full hog on it and that, Yeah, you fall flat on your face. He used to be a little bit tighter and a little more circumspect to start off with, and yeah, then we know what he can do later on. In the last few innings, not just this one, in the last few innings, he's away from the body, caught at point. He wouldn't get out like that on 4, 7, 9. He would get out like that at 37, but not yeah, at 4, 7, 9. He wouldn't play those shots at 4, yeah, 7, 9. yeah. That makes sense what you're saying, because um, what was working for him, he's the one who knows about it. So Yeah. maybe So he's trying too hard to get to that system. Like, you have like a routine kind of a thing, like, okay, this is what I was doing, and I've scored so many runs. Now he has to fall back to what were the things he was doing, and it is true. not easy to fall back to things, because the first thing is, it would have happened in so many different situations. You cannot put a point on, say, like, maybe this is what it worked. So I'm True. sure he's trying to get that thing in him, trying to figure out what it is. He looked a little better today, to be honest, than the previous two games when he came on to bat. But that focus and the look on his face is something which is very normal. He That is how he looks when he comes into the bat. But again, there is maybe in his mind also, like, एक innings की बात है, so he's also pushing it too hard and trying to get out of it. But he needs to find that place where it used to make him feel comfortable. The place which made him comfortable was the cricket pitch, so he needs to go back to that. Right. Now, let's talk a little bit about Rajasthan's batting. I was talking about Riyan Parag's innings today because he was in form and he kind of helped his team when they needed it the most today, made those runs. So, what kind of strength will he now add to Hetmeyer in the middle order now going ahead? Rima. देखिए, रेयान पराग की बात कर रहे थे, पहले बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ किया नहीं उन्होंने, किस लिए खेल रहे हैं नंबर 6 पे। मैं सुन रही थी कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे, बट उन्होंने बता दिया क्यों उनको राजस्थान बैक कर रही है। और आज मैं देख रही थी क्या स्टैट्स से 56 रन्स बनाए उन्होंने नॉट आउट 31 बॉल्स पे, और बाकी टीम ने बनाया है 85। यानी कि पावर प्ले में जब विकेट गिरेगा ना, राजस्थान का 3 विकेट गिरे थे जिसमें बटलर का भी एक नाम जोड़ दीजिए, तो मुश्किलों में पड़ सकती है ये टीम। लेकिन मुश्किलों में एक अच्छी इनिंग खेली रियान पराग ने। हालाँकि ये नंबर वो नहीं है जिसमें वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा ऊपर खेलते हैं या फिनिशर का रोल कर रहे हैं। अच्छी बात क्या थी, जो उनका शॉट सिलेक्शन था, जो वो अपने रिस्ट से पावर निकाल रहे थे, वो टाइमिंग अच्छा था और एंड तक खेले वो। उन्होंने वो 25-30 बनाने के बाद विकेट थ्रो नहीं किया। सो ये जितना वो खेलेंगे ना, उतना वो निखर के आएँगे, उतना मैच्योरिटी दिखेगी उनकी इनिंग्स में। आज उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था, वो एक मैच विनर वाला रहा। 50 रन बनाए पहले, फिर वो 4 कैचेस पकड़ी, काम वो नज़र आए, एंड तक खत्म करके गए मैच को, और यही उम्मीद भी कर रहे थे। इन्होंने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं और अच्छा खेल सकता हूँ, और आज वो मौका था। अगर वो शायद ये मौका गँवाते तो कुछ शायद हम उनको ना देखते, लेकिन आज उन्होंने इनिंग खेली जिसकी वजह से आज वो मैच जीते हैं आरआर। वरना आप 85 थे उनके, कितना बना लेते और 20-30 बना लेते, तो शायद ये Exactly. मैच इस टाइम आरसीबी का होता। तो वो जो अपने इनकी बॉलिंग यूनिट इतनी अच्छी है ना, गुजरात टाइटंस की और आरआर की ना, कि 150 भी डिफेंड कर देंगे, इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ। तो वहाँ तक पहुँचाने में रियान पराग का था काफ़ी हाथ। See, also just to add to what Rimaji says, he will not often get a chance to play this sort of innings because they won't have a slide like this. Yes. So he will have 8 ball 14, 10 ball 19. We will say कुछ नहीं करता है. Yes. 5 ball 7 out हो गया एक दिन.
फर्स्ट बॉल मारने के आउट हो गया 19th ओवर पे, तो सब बोलेगा साल का फिगर्स देखो. But when he gets an opportunity like he got today, can he make a difference? Yeah. And he will be valued for such innings, because today he actually got a proper chance. It's the toughest place to bat at 6, 7, 8 in a strong team where George Butler is doing everything and batting आती नहीं, last में भेज देता है, अच्छा भैया आप 4 नंबर चले जाओ, 2 ओवर बाकी है. Then you go hit out, your strike rate is 140, but you only scored 13 runs. So the numbers don't add up, but they add up on evenings like today. Absolutely. And on a day where we were talking about the law of averages, जहाँ जॉस बटलर शायद नहीं चलेंगे और वो नहीं चले. ये तो हम बोल के वेदा रीमा के लिए कर दी, बोल के. लेकिन हेजलवुड ने बहुत अच्छा बॉल डाला. मैं हैरान थी जब वो शाबाश को लेके आए थे, विकेट में पेस था, बाउंस था. सिराज और हेजलवुड डाल रहा है, आज जॉर्ज बटलर का लॉ ऑफ एवरेज. अब तो थोड़ा प्रार्थना करके पहुंचो, उधर तक तो पहुंचना चाहिए था. देखो आरसीबी ने प्लान किया ना किया, बाहर वेदा और मैंने तो करके गए थे. देखो वो कुछ मैनिफेस्ट करके गए थे, उनको जॉर्ज बटलर को आउट कराना था. Jumping, can you imagine? Particle out and Veda is jumping. This is the Indian Premier League. ये में particle का भी ऑफ डे रहा. प्रसिद्ध कृष्णा में कर्नाटका का है ना वेदा? दिखा नहीं आरसीबी को. What I want to know here is Veda, I'll give this to you. Once again आज राजस्थान आर अश्विन को लेकर आए नंबर 3 पर, और शायद पता नहीं उनकी क्या सोच थी. वैसे तो अगर बैटिंग ट्रैक है, ज्यादा मार सकते हैं, तो वो सोचे कि वो आके वो क्विक रन्स मार लेंगे, बट आज वैसा भी नहीं था. So what was their सोच, what was their strategy behind sending R Ashwin once again on the top? Whenever Ashwin is involved, I don't know what the strategy is, because everybody kind of gets stumped with what he comes up with. Like batting at number 3, I don't know, like considering the fact that today number 6, the 6th wicket fell, Trent Bolt was batting. So they don't have enough firepower in the end. If Hetmeyer or Ryan Parag doesn't give that firepower, they don't have, because they have this pure bowlers who come in and will, just nudge around or stuff like that. But I mean, I feel he would have been better off batting lower order itself, because he just gives that cushion or things in the head also for the bowling captain. You would have that, okay, we still have batter still Ashwin, so that is how you would count. But if you send Ashwin up the order, and if you're trying to utilize power play and do it, but he's not someone who would hit over covers or hit mid on mid off like for sixes. He might get you boundaries, but in that bargain, if you are not sending your batters, like proper batters, like I am for Sanju batting at number 3 regardless of when the wicket falls. So I feel like that is where they're missing. Earlier the strategy was that because they had Yashasvi and Dev, that they could just shuffle around one of them to number 3 and that settle down, but that didn't work. So once that plan didn't work, you probably should say like, okay, I'm going to bat at 3 and then the rest of them can follow later on, like whatever order it is. But I think that number 3 position is something which is very, very dicey for RR. It can come back biting to them at crucial junction of the tournament and crucial stage of the match. But I just hope so that they rectify that. And if they could get Sanju to bat at 3, I think it will look a lot more solid than how it is now. Right. Do you agree, Joyda? Yeah, I agree. I see the reason why they sent him, because they wanted to up the ante a little bit, but they didn't want to sacrifice a proper batter. So they wanted somebody like a number 6, 7, 8 to go and throw his bat around. Agar kuch run aaya, agar out bhi ho gaya to koi problem nahi. He started well with a couple of boundaries, and when he got out, but I also agree with Veda that you got to get a proper batter in, because what Sanju Samson can do with the bat without slogging, it's probably as good as what Ashwin can do by slogging. Because such pure cricketing shots, also the power play. Sanju loves batting at 3. Every time his best numbers are at number 3. So he wants to bat at 3, and everybody has a little bit of a superstition. मैं 3 number पे ही खेला हूँ. That's the reason why Virat was also brought up. Anuj was there, so we brought him up. Okay, नहीं हो रहा है. Okay, come back to your best position. And they showed some stats today where his numbers at the top of the order were baffling. 40 plus average, huge strike rate, 500s, 50s, baffling.
So it's good to see that he's back. So I agree with Veda on that, but I can also see why they did it. Because their batting is not very deep, they didn't want to lose Sanju playing out of his comfort zone. So they said, okay, we'll sacrifice with Ashwin. Right. No, but still, whatever 10 minutes, 15 minutes Sanju batted, it looked like a different pitch altogether. Like, the first ball he came in and he just middled it. He didn't even push it. And then that race to the boundary, like the first ball he played Hasaraga. So what I'm saying is, if someone needs to take time and if someone needs to go and get the big runs, and after Josh it is Sanju, and for him you need to give that freedom is what I feel, like to go and play up the order. And I'm sure he's a batter who likes it when his innings starts off with a boundary. He looks like a different player altogether. He's not like someone who would come like nudge around 1-1-1 and then tries to settle and go big. The ball is in his slot, first ball, he will still go for it. So with that, yeah, but I agree with you with all these points. I'm just trying to figure out why they sent Ashwin at 3 and thinking aloud. But I agree with you. Like I said, when Ashwin is involved, you can't figure out what's happening. he himself will probably give an interview. And that's when in fact, as we speak, he's on air. Yeah, he would have spilled it all. But Joydeep concern and explaining to him what happened. Yeah. But जयदीप कंसर्न तो एक ही है, संजू सैमसन को आप नंबर 3 पे भेजिए, नंबर 4 पे भेजिए कि सेट होते हैं और फिर विकेट थ्रो कर रहे हैं. आज भी वो जो शॉट था, संजू सैमसन को वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं है. आई मीन उनको समझना, जैसे अश्विन का समझना मुश्किल है, क्या वो अब स्ट्रेटेजी से उतरेंगे? संजू सैमसन के शॉट को समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. और वही बॉल उन्होंने कवर के ऊपर से छक्का मारा था उसका एक ओवर पहले. एब्सोल्युटली, आई मीन सामने खेलना उनकी स्ट्रेंथ है. वो रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, मैक्सवेल खेलता है, मेरे को समझ में आता है. So यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है. शाबाश का बॉल में जो 2 छक्के मारे, डिसेंट बॉल्स थे. And this was the same ball. बट यही फैंसी शॉट्स खेलते हैं और यहीं पे मुझे लगता है इनको सीखना चाहिए. विराट कोहली को देखिए, उनके पास फॉर्म नहीं है, वो जूझ रहे हैं, नंबर 1 खिलाड़ी वर्ल्ड का, और इस टाइम परेशानियों से स्ट्रगल कर रहा है. वो रन नहीं बना पा रहा. और मेरे हिसाब से वो 10 बॉल खेले ना, 10 की 10 उनको समझ नहीं आई थी आज. इनसाइड एज, आउटसाइड एज मिस किया, फिर एज लगा. सो वहां से आप देख लो कि आप टच में हो, आपको स्टार्ट मिल रहे हैं, प्लीज कन्वर्ट इट. क्योंकि जब फॉर्म जाता है ना तो बॉल बल्ले से टच नहीं होती. शायद यही कारण है that he has not been able to cement his place in the Indian team, because there's no doubt about his quality. That innings that he plays, that one innings that he plays, it's up there with the best in the whole of the Indian Premier League for the year. True. But the consistency bit and the shot selection, I agree with you, Imaji. Right, we saw Daryl Mitchell also today on the side. I think उनकी पहली game थी. He can bowl, he can bat. So how much of a strength would it be? How important would it be for him to come onto Rajasthan's side? Veda. Well, like if you look at it, RR needed someone who's an overseas player who can bat, bowl, and we saw that he was very good on the field as well. Like the areas he was covering, he was very quick. So that is something which they were missing. They've tried with Jim Inisham, it didn't work out, and they don't have enough options from whom to pick that kind of a player, because they have either pure bowlers or they have like a Hetmeyer or someone who can only bat. So you need someone who could squeeze in a couple of overs, maybe come and hit some sixes and boundaries, which didn't happen today. Maybe it's his first game. But what I liked about him the most today was how he was on the field. Like I felt he was electric on the field. There were a lot of half runs which where batters were thinking of converting, but he was right there cutting it across and on their face saying that, look, you can't run from here. So those are the things as characters I think plays a big role, and it kind of gives the bowlers an enough confidence that I have fielders backing me. So probably I can maybe try these balls and see how it works. But there were 2-3 stops he did today, like in mid wicket and covers and stuff. I think he was really good. राइट, एंड आरआर की बॉलिंग तो अच्छी थी. रीमा, आप भी पहले कह रहे थे सबने अपना पार्ट किया. चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा तो है ही, लेकिन कुलदीप सेन,
उनको मेंशन करना बनता है, 4 विकेट लिए हैं, बल्कि 2 क्रूशियल विकेट्स उन्होंने ली फैफ और मैक्सवेल, समथिंग विच मार्को जैनसन ने जो उस दिन किया था इनके साथ ही, आरसीबी के साथ, लेकिन उन्होंने काफी जल्दी ले ली थी वो 2 विकेट्स। कुलदीप सेन ने थोड़ी सी लेट ली, लेकिन 2 क्रूशियल विकेट्स लेने में आप टीम को वैसे बैकफुट पे डाल देते हो। स्पेशली अगर उसमें डुप्लेसिस है और उसमें मैक्सवेल है, फर्स्ट बॉल उन्होंने आउट किया, पेस था उनके पास, 140 प्लस में डाल रहे थे, बाउंस उनको मिला। सबसे अच्छी बात कहते हैं राइट एरिया हिट कर रहे थे। ये आज ये इंडियन प्रीमियर लीग में ना ये देखने को मजा आ रहा है कि इंडियन प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। 4 विकेट उनके नाम है। हम उम्मीद करते चाहल से, ट्रेंट बोल्ट से, लेकिन ये खासियत है ना आरआर की, हर दिन एक नया एक नया मैच विनर निकल के आता है। सामने वाली टीम में मैच विनर है लेकिन फॉर्म नहीं है, इनके पास मैच विनर है। और सबसे अच्छी क्वालिटी थी इनके पास, जो हिट कर रहे थे लेंथ, वो पेस और वो बाउंस जो उन्होंने करवाया, आउटस्टैंडिंग। आई मीन ऐसे प्लेयर को बैक करना चाहिए। पहले मैच में उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉल डाली थी, एक मैच खा के आपने बाहर बिठा दिया, आज ये फिर वापस आए, फिर प्रूव किया इन्होंने। अब एक आधा मैच खराब भी जाता है, जैसे उमरान मलिक का वहां पे जा रहा था, उन्होंने बैक किया, और अब देखिए उनको खेलना हर बैटर के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लगता है इसको भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि डेडली कॉम्बिनेशन है, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, और उसके बाद कुलदीप सेन आते हैं, और उसके बाद स्पिन अटैक आता है। 150 या 144 भी डिफेंड कर रहे हैं, डिफिकल्ट ये पेसर है। राइट, सो आज का मैच हुआ राजस्थान रॉयल्स के नाम, उनके नाम 2 और पॉइंट्स हो गए, टेबल में और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। आरसीबी को बाउंस बैक करना पड़ेगा। कल एक बहुत बड़ा गेम है, it's definitely going to be a cracker of a game. We have somebody who's on right now at the moment on top of the table. गुजरात टाइटंस हैं और खेल रहे हैं वो अगेंस्ट हैदराबाद। अब उनके साथ गुजरात ने अब तक सारे मैचेस जीते एक्सेप्ट द वन दैट दे हैव लॉस्ट वाज अगेंस्ट हैदराबाद ओनली, और हैदराबाद अपने पिछले 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के आ रहे हैं। 1 versus 2. Tomorrow, number 1 team in the table playing the number 2 team in the table. Yes. Oh, that's KKR, Joyda. हैदराबाद करके आगे I think 2 winners trophies and 1 runner-up trophy. Just take a year off. You want to go back to that only. Go back I'm a major in history. So 1 versus 2, मतलब इसको समझ लो एक मिनी फाइनल ही हो सकता है। I'm pretty sure it's going to be a competitive game. Joyda? Yeah, of course. I mean, we can't call it a final because final बहुत दूर है। अभी तो ट्रेन just छोड़ी है, दिल्ली बहुत दूर है वैसे, but I still feel that because once you qualify in the top 4, Priya, another tournament starts. Of course, initially you just want to make it to the top 4. You want to be 1-2 because then you get 2 cracks of the cherry, but you will take number 4. If all these teams have said 4 number पे qualify करोगे, I mean, that's how close this tournament is. Okay, because it's difficult. 8 team में 4 difficult था 50%, अभी 10 team में 4, so 40% team gets in, 60% is out. पहले 50% होता था, so it's gotten even tougher. Yes. So I won't call it a final, but I'll definitely call it a big game, because you also want to be in the 1-2 because you get 2 cracks of getting to the final. You want to keep that momentum going. It's midway and getting into the second half. Soon teams will start panicking. One is definitely out, one could be out. So it's again becoming an 8-team tournament, and then the business end comes when you're playing for position. So it's a very, very important game, and one that I'm really looking forward to, because 2 informed teams are playing. Yes, absolutely. Give me your pick before I go to Veda. I'm going with Gujarat. I think you can't go with Gujarat. Gujarat is my team. That's why I got to pick first. You have to go That's why I asked him to pick Beta, first. You can pick Hyderabad or go with me. Choice is yours. For once, be on one side, guys. It's okay. No, I don't want to be any side. I'm not going to give any prediction now because Gujarat is my team. Everybody knows. After RCB, it's Gujarat where I have not flipped. I've stuck to Gujarat from the day one. Why is Gujarat your team? I mean, link. Huh? Why is Gujarat your team? Like Rimaji has 3 Delhi because players. Abhinav is playing. Rimaji has 3 Delhi players in every team. Nitish Rana, No, it's coaches in Ashish Nehra, Gautam No. Having the Prasidh somewhere else, or having Devda somewhere else. I'm not friends with them as I would like it, if that is how it is to be put across. But Abhinav is the one who I've grown up with. Like we've played cricket together, so it's easy.
Yeah. Okay. Fair enough. If Veda, then she gets the first pick. Ladies first. She's going with So Gujarat. Joyda is I'm going going with with Hyderabad. Hyderabad. I would have gone with Hyderabad if they were making Shreyas play. Shreyas Gopal is not playing. रीमा आज वेदा के ऑपोजिट जा रही हैं आज के बाद, है ना? नहीं, मैं गुजरात के साथ ही हूँ। मेरे को ओह! टीम पसंद है। देखिए कल मैच अच्छा होने वाला है। दोनों की बॉलिंग ये साइड ना 5 गन बैट साइड है। सब स्क्रीन वाला. ये 5 हाँ? बैट सब स्क्रीन वाला. ये स्क्रीन वाला got a Yeah, 5. I think just to make our conversation little more happening. किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, रीमा जा रही है मैं गुजरात के गुजरात साथ। के उनकी साथ। बॉलिंग अटैक की वो सबसे बड़ी फैन है। दोनों की अच्छी है। दोनों की देखिए अच्छी सामने है। टी नटराजन है, वहाँ पे उमरान मलिक है, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार है, येंसन है, किससे बचेंगे? ये बैटल है ना एग्जैक्टली। 2 बॉलिंग साइड का है, तो जो अच्छी बैटिंग करेगा वो जीतेगा, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी हार्दिक पांड्या की साइड के साथ। Priya, मेरा I know दिल्ली your का choice. आशीष So नेहरा है it's वहाँ 3-1. पे। यार Priya, I know your choice. It's 3-1. I know your choice. It's 3-1. नहीं, I wanted to take गुजरात, but अब 2 गुजरात नहीं, आप बैठी हैं गुजरात. यहाँ पे, तो मैं आपकी You've been साइड taking Gujarat. You've been taking Gujarat every time Gujarat has every played. time. Yes. So you take They Gujarat. won I also. thought it was Lucknow. Oh, you changed. Lucknow and Gujarat, I love both the new teams. Oh, okay. She's So taking I both. thought it was Lucknow. That Lucknow is where you would go Yeah, like, Lucknow oh, is where my heart is, but yes, ये I न्यू love Gujarat. बेबीज़ को जिन्होंने अडॉप्ट किया ना, उसकी वजह से हमारी मुंबई और सीएसके खतरे में पड़ी है। मुंबई तो चली गई है, सीएसके भी कभी भी चली जाएगी। Alright, कल देखते हैं क्या होता है, but we definitely expect a cracker of a game and a close contest and good cricket tomorrow. So good Ladies, night. tough day today, but the sun will come out tomorrow. इंशाल्लाह। आरसीबी का कुछ नहीं होने वाला सर। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। Alright guys, good night. Take care. गुड नाइट।